बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 1। और इस आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Digital systems are the backbone of today electronics and computing. They manipulate digital information in form of binary digits which are either 0 or 1 and are used in calculations devices such as calculator and computer among others. यानी कि डिजिटल सिस्टम हर चीज में यूज किया जा रहा है, चाहे हमारे पास वॉचेस हों, बाइक मीटर्स हों, कार मीटर्स हों, ये सारे के अंदर हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल सिस्टम को ही यूज करते हैं। कैलकुलेटर्स हों, ये तमाम चीजों में क्या यूज हो रहा है, डिजिटल सिस्टम ही यूज होता है। और डिजिटल सिस्टम किस पे भी यहाँ पे काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अगर हम नेक्स्ट, व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं जी? Analog signals are signals that change with time smoothly and continuously over time. They can have any value within given range. Radio wave signals, digital signals are signals which have only two values that are in form of 0 or 1. These are utilized in digital electronics and computing system. Analog to digital converter and digital to analog converter are important properties in today's technologies development, enabling the transmission and control of signals. यानी कि एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो कंटिन्यूसली स्मूथली क्रिएट करते हैं बगैर उसके दरमियान। जिस तरह हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा, टॉप सुबह के टाइम टॉप पे जाता जाएगा, जैसे ही 3 बजेंगे उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, नीचे। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि वो मिस हुई हो। मतलब अगर सुबह अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद 25 होने के लिए वो क्या होगा, हर पॉइंट से होता हुआ जाएगा। ये नहीं है कि 20 से डायरेक्ट 25 पे पहुंच जाए, 25 से डायरेक्ट 30 पे पहुंच जाए, दरमियान वाली वैल्यू स्किप कर दे। नहीं, वो हर यहाँ तक है पॉइंट वैल्यू, जैसे 20.001, इस तरह 002, 003, हर पॉइंट से होता हुआ जाएगा। और एनालॉग में क्या होता है, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 की ही तरह यूटिलाइज होती है। अब इसके लिए दो सिस्टम्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल के लिए, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, और दूसरा क्या है जी, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए इन सिस्टम को यूज किया जाता है। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल क्या है। एनालॉग कंटिन्यूस होते हैं, डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। इनमें मखसूस इंटरवल ऑफ टाइम होता है, मखसूस एक वक्फा होता है। इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होती है, इसमें फाइनाइट होती हैं, 0 और या 1 होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है। इसकी एग्जांपल हमारे पास बाइनरी डाटा है ना, कंप्यूटर है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जिंग यानी कि एडीसी। Analog digital converging is to converging of analog signal into digital signals which are discrete and can be easily processed by computerized devices like computer and smartphones. Digital to analog converging. Digital to analog converging in DAC is a converging whereby analog signal are converted to digital signal, making it possible for human to access the information, for instance through speakers as depicted in figures। इसको फिगर में दिखाया गया है, ये कुछ इस तरह डाटा जाता है। मसलन कोई भी इंसान क्या होता है, अगर मैक में बोलता है तो मैक से साउंड किस, माइक्रोवेव से एनालॉग सिग्नल किस में जाते हैं जी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। फिर इसके बाद एडीसी में जाते हैं, एडीसी इसको क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल से फिर
फिर आ गई, यानी कि ये कन्वर्ट होते हैं, फिर डीएसी में चले जाते हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक वोल्टेज और फिर एनालॉग, फिर ये स्पीकर में आवाज आ जाती है। ये इस तरह इसका कुछ प्रोसीजर होता है। ADC and DAC converging, why is it is needed? इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? Digital to analog converging and vice versa is a critical since it is enable data processing, storage, and transmission. Digital signals are such less affected by noise and signal degradations and are therefore better suited for the transmitted and storing the information over long distance. Examples की अगर हम बात करें sound waves, let us consider a situation where one person is speaking into the microphone while the other person is receiving sound through speaker as illustrated. Microphone. When you speak in the microphone, your voice produces sound and waves, analog signals that are captured by the system. This is done by converting the sound wave into the digital form using ADC with the microphones. Finally, this digital data can be transmitted over long distance with little or no degradation in quality. Access speakers. Speaker का काम क्या होता है? At the receiver end, the receiver end होता है, the digital signals are converted back into the analog signal with the help of DAC. The speaker then translates these analog signals back into the sound wave to enable you to hear the other person's voice if they are speaking directly to you. यानी ऐसे लगता है जैसे वो पर्सन आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हो. Next है fundamentals of digital logics. Digital logic is the basics of digital system. It involves the use of binary numbers, that is 0 or 1, to represent and manipulate information. Digital logic circuits use each of these binary values to perform various operations, and they are essential to the functioning in operation of computers and many other electronic devices. In digital circuits, the two states 0 or 1 are represented by different voltage levels. Conventionally, a higher voltage such as 5 volt refer to binary 1, while the low voltage of instance 0 volt refer to binary 0. These voltage levels are used as logic levels. Logic levels are needed to switch on and switch off the device and define way through which digital circuit execute operation and process information. तो ये था हमारा यहाँ तक का फर्स्ट टॉपिक, ये कंप्लीट होता है. सो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.